It is an absolute delight, sir. It's an absolute delight to interact with you on these offbeat topics as well as on astrological topics. Thank you so much, sir. Welcome, sweetie. Welcome. It's always a pleasure to talk to you, and thank you for agreeing to do this. Okay, this was such a repeat questions and different kind of questions that I used to get. So I thought I'll create a video out of it and maybe put a transcript on the website or something. So we have collected a lot of questions, and so you can ask them one by one, and I'll So be happy to answer you. this is out of sheer curiosity, sir, which every person has when we are undergoing Shani Rahu and Ketu periods. So, sir, gemstones, do they actually work, sir? Do Oh they yes. really Oh yes, I know. There is this new age movement. I don't believe in gemstones, and I want to take it off. For the record, I tried that movement in 2014. Okay, I took off everything which I had, and oh my God, did I suffer? Okay. I thought for a while it wasn't because of it, and I tried that I shouldn't be wearing anything, and finally 2017 I was like, enough. I should wear something. So today, you see, I've got 4 rings. So it may sound cool, you can get away with saying things like, no, no, this doesn't work. I don't believe in that. Then there are some people, no, no, I believe only in karmic remedies and I don't believe in that. It is like a, Ayurvedic physician saying, I don't believe in allopathy. Arey bhai, both work. Okay. So I've tried things without it. I've tried things with it. With it is always better. So one thing which I have almost always noticed, wearing a panna, an emerald, will make your brain work faster. I've tried it on so many people. So yes, this thing does work 100%. I've tried it, without it, both. With it is always better. Sir, the thing is, जब stone लेते हो ना, there are few things that are to be kept in our mind for a serious consideration, like the minimum weight of gemstones needed for the astrological purpose. So, what are we supposed to take care of while we purchase the So stone? this is a funny one. Okay. There are many schools of thought, and I've tested them actually. The minimum weight required, some people say, is 1.5, some people say is 2 carat. Okay. So I go with the 2 carat school of thought just in case. Okay, just in case. So minimum requirement is 2 carat. Uske upar the weight doesn't matter. Of course, if it's a bigger stone, it will be a little more effective. But what you should rather invest in is the quality and clarity of the stone. Okay, you need not worry about कि साहब ये 2.5 है तो ये 3 होता तो बहुत अच्छा होता. Not necessarily. I would rather have a 2 carat stone which is clear and powerful than have a 5 carat stone which is like useless. And one thing I would like to add, ये बहुत बड़ा एक scam चल रहा था body weight के हिसाब से. So people tell me, people call me, sir मेरा weight 80 kg है, कितने कैरेट रहेगा? मैंने कहा यार ये कोई खुराक थोड़ी तय करता है. Now I am 120 plus. Okay. मैं ये 2 point something कैरेट का पहना हूँ, मुझे तो गले में पत्थर पहन के घूमना चाहिए. It doesn't matter. Okay. It is not about body weight. So if you lose weight तो क्या करोगे? वो उसको तोड़वाओगे बीच में से. And if you gain weight तो 2-3 पहनोगे. That doesn't matter. One thing, and then there are these people के साथ सबसे कम से कम 5.25 रत्ती होना चाहिए. That's nonsense. So it is not about size. When it comes to gemstone, Godzilla थोड़ी है. So here size doesn't matter. Okay. What matters here is that the stone is clear and it has a good quality. So मैं वही बोलता हूँ, what do you want? A big lathi or a small gun? I would rather go with a small gun. So stone should be clear, beautiful, good looking. You should like it personally. Now, a man of my size, 6 feet, 120 kg, I'm wearing this chotu sa stone, but it is a Colombian stone, okay, and a very, very clear one. I could have picked a 7 carat stone, but that would have been a waste of money. So instead of investing in size, invest in clarity. 2 carats above, it's good enough for astrological purposes. So वो सारा nonsense फैलाया हुआ है just for the sake of selling bigger stones.
If somebody buys the 2 carat stone, I make chotu sa money. Somebody buys the 5 carat stone, I make more money. Yeah, but I wouldn't unnecessarily peddle things and waste my clients' money. I never do that. Sir, whenever we buy stones, some people give it for a span of 2 months, like if you are particularly there, and some tell, "Arey, ye tu sirf 15 din pehen," and they ask us to spend a bomb on it. Like, I don't understand whether we are going to buy a stone or घर के property के papers रख के आ जाए, ऐसा है sir. So do these stones have a lifespan? यार बच्चे ये ना स्कैम है. कोहिनूर हीरा वी ऑल नो 300-400 साल से घूम रहा मार्केट में. Right, it was with the Afghans, then Indians got it, then the British took it. उसका तो वैल्यू खत्म हुआ नहीं. तुम्हारे छोटू से एमराल्ड या येलो सफायर का वैल्यू खत्म हो जाएगा. नो, until unless it is not damaged. क्रैक आ गया बीच में, टूट गया, then it is a problem. But otherwise they would pass from generations to generations. Some people say 5 साल में बदलो, some say 9 साल में बदलो. And I was like, what do you do with the rest of it? बोले जी हम तो नदी में डाल देते हैं. मैंने कहा बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, बट यू नीड नॉट डू दैट. मुझे 4-5 साल हो गए स्टोन्स पहने, they're doing fine. So we don't have to think that. As long as it is not damaged, you need not take it off. Simple. They can be passed through generations. There is no lifetime. It is a very long-lasting thing. So, sir, which are the stones that a person could wear without a recommendation? You should never wear a gemstone without a recommendation. Because, sir, Google is filled with numerous articles. If you have particular dasha, you are supposed to wear this. And the deadliest thing I read on Google was, if you have Ketu Mahadasha, wear cat's eye. And I got a minor heart attack. I was like, Ketu Mahadasha में experiment नहीं. तुमने मेरा वो मीम देखा था जो मैंने बनाया था? Viewed the meme on YouTube. कि अगर कोई ये कहता केतु महादशा में कि इसको कैट्स आई पहना, तो मेरा रिएक्शन है खोपड़ी तोड़ खा लेगा. बिकॉज पीपल डू नॉट नो द ब्लडी बेसिक्स. प्रॉब्लम क्या है ना, जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी है इंटरनेट पे. यू कैन गो एंड राइट एनीथिंग एंड 90% ऑफ द थिंग्स आर यूजलेस एंड दे कैन बी डेंजरस. मैं कितने क्लाइंट से बात करी, साहब केतु की दशा में हमने कैट्स आई पहना हुआ. मैं कहता हूँ भाई फोन काटने से पहले ही अंगूठी उतार. राहु की दशा गोमेद पहना हुआ है, भैया फोन काटने से पहले ये उतार, फिर मैं अगला शब्द बोलूं. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर प्लेइंग विद. एक चीज समझो, यंत्रा विल दे आर वेरी माइल्ड. मैं खुद सिल्वर यंत्रा रखता हूं एंड आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद देम. आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड. क्योंकि वो यंत्रा भी जो अमेजोन वगैरह पे बिकते हैं, वो चाइना से 20 रुपए की 10 की पत्ती मंगाते हैं, आपको 300-350 में बेचते हैं. Okay. It has to be a silver yantra and it has to be particular dimension, which is of course a trade secret. I wouldn't put it on a public platform. और उसको energize कैसे किया जाता. Yantras you can keep for all 9, कोई problem नहीं. But when you wear a gemstone, you put a planet on steroids. Oh God. और अगर वो planet गलत बैठा है आपके चार्ट में, वो आपकी बैंड बजा देगा. So please repeat it for the audience, the steroids thing. If you wear a gemstone for a particular planet, you put that planet on steroids. आप उसको बहुत ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं. तो अगर गलत planet का आपने पहन लिया, it will make you miserable. They can virtually put you in a hospital. I'm not kidding. There are people who come कि साहब हमने तो गोमेद की, राहु की दशा में गोमेद पहन लिया, मून राहु इकट्ठा चार्ट में 8वें खाने में. और लाइक भाई पागल खाने जाना तुमने, क्या करना चाह रहे हो? कैट्स आई, मेरी एक कॉर्पोरेट टाइम की फ्रेंड को कैट्स आई पहना रखा था किसी ने केतु दशा में. मैंने कहा देवी इसके बाद क्या हुआ? कहती यार एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. आई वाज लाइक थ्रो दिस आउट इमीडिएटली. So देखो, even I sell gemstones, मेरा भी काम है, but I have never sold a single cat's eye or a neelam in my life. So neelam, cat's eye, gomed, 99.99999% people should never even touch. Have the particular stones. Yes, you go and Google them. लोग कहेंगे शनि की दशा चल रही है तो नीलम का स्टोन पहने. अरे चौथे बैठा होगा, घर से निकलवा देगा. This is what people don't get. The thing is, sir, these stones have a connection to mythology, like you always emphasize.
if you could give us some background in the mythology, we would be glad. If you Okay. So the first thing you need to understand, the supreme malefics are Shani, Rahu, Ketu. They are supposed to punish you for your whatever wrong you have done. Okay. past And I've life. seen most of the people suffer in their dasha. Again, it is very important to understand their nature and where they are sitting in the chart. Okay. Some people will randomly come कि साहब मेरा तो उच्च का शनि है, बैठा कहाँ है, बाहर में बैठा, वो नीलम पहन के घूम रहा। शनि भैया 2.5 साल उच्च का रहता है, सारे करोड़पति थोड़ी पैदा होते हैं 2.5 साल में। देन यू नीड टू सी कि वो प्लेनेट आपके चार्ट में फंक्शनल मेलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिट है। ओके, फॉर एग्जांपल मकर लग्न पर्सन विद अ वेल प्लेस्ड शुक्र, तो दोनों चीजें, बैठा कहाँ है, फंक्शनली क्या है। So somebody with a Makar Lagna well placed Shukra can be a diamond. But let's say a Dhanu Lagna with Shukra in the 6th house, वो पता लगा पहना तो साहब वो डायबिटीज हो गया, यूरिनरी प्रॉब्लम हो गया, 10 कलेश हो गया। सो यू नीड टू सी कि वो प्लेनेट चार्ट में क्या कर रहा है और कहाँ बैठ के कैसे फल दे रहा है, देन यू डू इट। उसके बाद में ना पीपल वुड रैंडमली से कि साहब मेरा तो राशि रत्न ये है, मेरा नाम लेट से राघव है, तो आर से तो तुला राशि है, तो मैं पहन लूंगा राशि रत्न, मेरा डायमंड है। पता लगे आपका मीन लग्न है, वो डायमंड जो है आपको अस्पताल के चक्कर कटवाए। दैट्स मैडनेस। पहली चीज तो नाम आपका कुछ पुराने जमाने में लोग रखते थे राशि के हिसाब से, एंड यू कैन नॉट वियर योर राशि रत्न रैंडमली। भाई अपना लग्न चार्ट D1 के हिसाब से पहना जाता है। Rashi Ratna and all is just a big marketing gimmick to sell more gemstones. तुमने चार्ट नहीं देखा ना, तुम्हारा तो नाम इस अक्षर से है तो ये राशि होगी, लो जी नीलम पहन लो, बल्ले बल्ले। सर नीलम का एक पत्थर है ना, इसके बारे में there are so many fables, so many my जो ancestors थे ना, my ancestors used to narrate such insane stories about Neelam, like it will make you either a pauper from a king or vice versa. So are they true? Is there any that is partially true. देखो अर्बन लेजेंड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में, बट उनके पीछे कहीं ना कहीं देयर इज अ कर्नल ऑफ ट्रूथ। शनि बहुत कम लोगों का अच्छा होता है एंड दे रूल द वर्ल्ड। That's the 1%. Now, if that person with a good chart, and mostly Shani is good for Tula Lagna and Vrishab Lagna people, उसमें योग कर, because that is the luckiest Lagna. Shani becomes your daddy, your godfather. Okay? अगर इन चार्ट्स में नीलम बढ़िया प्लेस है और आपने वो पहन लिया, गुड इनफ। ओके, बट तुला लग्न हो और अष्टम शनि है, पहन के देखो नीलम, देखो कितनी ठुकाई हो। So you have to see that placement, and Shani is the most powerful of all planets. राहु केतु बंजारे हैं, उनके कोई वो नहीं है, साइंस नहीं है। ओके, दे कैन नॉट बी योग कारक और मारक और सम। शनि के पास पावर भी है, 2 राशियां भी हैं, और दबका भी सबसे ज्यादा। कलयुग का बादशाह शनि है, द बॉस ऑफ कलयुग। तो जिनका अच्छा है उनको तो बहुत बढ़िया कर होता है। But it's like playing with a very intense energy, so you need to be very very cautious. Sir, ये योग कारक आप इतना मेंशन करते हो, what does योग कारक actually mean, sir? Okay, good question. योग कारक planet is the one which owns one Kendra house and one Trikona house in your chart. For example, for single lagna, Mangal is the योग कारक। okay? वृश्चिक आगे 4th house, 9th house में चले गए मेष, तो दोनों बढ़िया खाने, राइट। सो मंगल बिकम्स योर गॉडफादर। मकर लग्न शुक्र, तो एक केंद्र एक त्रिकोण का जो मालिक है, दैट्स द योग कारक प्लैनेट, दैट्स योर गॉडफादर। सो सर, जो लग्न है उसी के हिसाब से स्टोन पहनना है या कुछ और लग्न के हिसाब से? नहीं, लग्न एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरा बुध अच्छा है, 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 1st हाउस, सो आई वोर पन्ना इन बुध दशा, आई वोर पन्ना इन केतु दशा, आई एम वेयरिंग पन्ना ना, तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके साथ में। मोस्टली लोगों के लिए शुक्र, गुरु और बुध के जेमस्टोन्स अच्छे फल देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज दीज 3 आर लाइक द सुप्रीम बेनिफिट्स। तो सबसे ज्यादा पन्ने पुखराज बिकते हैं। Okay, yellow sapphire and पुखराज and emerald. Yes. Yeah. Okay. So, sir, which metals are supposed to be used for these gemstones? Like
I recommend silver. Okay, and there is a reason to it. Of course, I make more money when people wear gold, but silver is a very neutral metal. चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है. Other planets can have an enmity towards Chandrama. Chandrama doesn't consider anybody an enemy. Okay? वो राहु के उसको भी सपोर्ट कर देगा रत्न को. Okay? वो शनि के रत्न को भी सपोर्ट कर देगा. तो सिल्वर इज अ वेरी चंद्रमा मेटल. तो सिल्वर में एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग. अब मैं वही कहता हूँ कि भाई ज्यादा पैसा है तो बेटर इन्वेस्ट दैट मनी इन अ गुड क्वालिटी स्टोन. खाना अच्छा होना चाहिए, प्लेट तो प्लास्टिक की भी चल जाएगी. Important point, yes. Yeah. तो जो देखो हाउ डू दिस वर्क, ये जो जेमस्टोन होता है इसमें से कलर छट करके वो रेत आते रहते हैं आपके स्किन के ऊपर. I was about to ask you the same questions. या सो सारा गेम इसका है स्टोन का. तो मेटल इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट. अब वो कुछ लोग पंचधातु अष्टधातु दे लुक अ लिटिल चीप. वो टेढ़े भी हो जाते, दब भी जाते. गोल्ड इज कॉस्टली. सो मेरा डिफैक्टो गो टू ये हमेशा इट्स ऑलवेज सिल्वर. Silver. Okay. ये लेडीज मैंने देखा दे प्रेफर गोल्ड. सो बी इट. So मार्केट में थोड़े लोग नवरत्न रिंग पहन के घूमते हैं ना, तो लिटिल पीसेस. देखो पहली चीज तो वो एक तरीका है जो छटाई में टूट फूट हो जाते हैं ना, जेमस्टोन कुछ काटते छाटते वो बिक जाते हैं. ओके. दूसरे 9 के 9 प्लेनेट आपके अच्छे हो, आपके भगवान कृष्ण के अवतार तो हो नहीं. So what you are wearing is you are wearing a mini gang war on your finger. शनि भी बैठा, सूर्य भी बैठा, चंद्रमा भी बैठा, राहु बैठा. What madness. Although वो इतने छोटे होते वो डैमेज नहीं करते, but it's waste of money at best and at worst it can be very dangerous. Sir, जो gemstones लेते हैं, how do we check the originality or the authenticity of the gemstones, sir? Because market में glass का piece बेचते हैं. It has happened with me. हड्डियां बेचते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? हड्डियां? हाँ हड्डियां. दे सेल ब्लडी बोन्स. ग्लास का पीस तो चलो सात्विक चीज है. आप एक जानवर की हड्डी पहन के घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है. दे मेक मूंगा आउट ऑफ एनिमल बोन्स. ओके. और चाइना के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तो भगवान जाने वो कुछ भी बना के बेचते. तो जो आईफोन को क्लोन कर लिए वो पुखराज पुण्य को क्या समझते. So there is no way anybody can tell this is an authentic piece, this is not, without a good laboratory test. Now coming to laboratory, 80-90% of them are fake. There are only 3 laboratories I trust. One is GJEPC जो गवर्नमेंट की है, जिससे मैं सारे अपने जेमस्टोन्स एनीथिंग अबव 20K वहां से ऑथेंटिकेट होगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं होगा तो नहीं खरीदूंगा और ना ही मैं बेचूंगा. सेकेंड इज IGI, GI है. ये 3 है. बाकी तो वो जो गली मोहल्ले वाली लैब होती है वो अंदर जाते हैं, धो देते हैं, जिस दुकानदार से सेटिंग होती है उसके हिसाब से उसमें भर देता है. तो दैट्स वेरी डेंजरस. तो ये 3 ही हैं जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ. GJEPC वो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगा हुआ हमारे फैक्ट्री के पास में. मैंने से हमारा फैक्ट्री द वन व्हिच आई हैव टाई अप विद, द वेरी बिग फैक्ट्री. वहां से जाता है, उधर जाता 3 दिन लगते उसको. 15 मिनट में पानी से धो के नहीं ले आते बाहर. द टैट इज लाइक 3 days. और उसके बाद में फिर वो पूरा बड़ा डिटेल वो देते हैं जिसका QR कोड वगैरह आता है. So whenever you buy a stone, get it certified from one of these 3, preferably GJEPC. No normal human being can tell the difference. Given ये लोग कितना precise हो चुके हैं. या imagine कि आपने मूंगा सोचा है and you are wearing a dog bone. How bad can it be? हुआ है मेरे साथ. I was actually, my sister had actually gone to Andaman Nicobar. So she had got stones, like the gemstones, from a shop there. And, you know, she did not have any authenticity certificate, or it was not certified. So by the time she got it certified from Hyderabad, turns out they were just normal colored stones. Yeah. And also online store here, let's not name it. She bought stones from there. She got cheated for like about the amount of 25,000 or per stone. 3 stones लिए थे. तीनों fraud fake निकले. One of the leading chains. यार मेरा मुंह नहीं खुलवाओ तो ठीक है. इसमें I don't understand how are they able to sell such, you know, such cheap stones online.
यार यू नो यू गो टू अमेजोन, तुम्हें 300 रुपए में पुखराज मिल जाएगा. I was about to ask you. हाँ, हाउ इज दैट इवन ब्लडी पॉसिबल? उसकी टेस्टिंग फीस 1100 रुपए है. हाउ कैन somebody sell you a पुखराज for 300, 500, 1000 bucks? Not possible. सर्टिफिकेट के साथ देते हैं वो भी. हाँ, तो वो सर्टिफिकेट भी तो वो 50 रुपए वाला होता, साथ की दुकान वाला बना के दे देता. ये गैंग है पूरा. एंड देयर इज दिस एंटायर कार्टेल जिसमें कि वो टेस्टर भी इन्वॉल्व है, सेलर भी इन्वॉल्व है, दुकान वाले भी इन्वॉल्व है, एंड दे रॉब यू ब्लेटेंटली. So sir, ये जो stones होते हैं heated, unheated, natural, there are these categories of stones. आई लव दिस क्वेश्चन. सबसे पहली चीज, पीपल कम टू मी, ये नेचुरल है? हाँ साहब, नेचुरल है, कांच का टुकड़ा नहीं. नहीं मतलब बिल्कुल नेचुरल है, लाइक डिफाइन नेचुरल, मतलब इसको हीट नहीं किया गया. एंड आई सेड अगर कोई बोल रहा है ये अनहीटेड है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे. यूट्यूब पे या कहीं पे जाकर के देखना, जब ये कोर निकलता है, इट इज अ वेरी डर्टी स्टोन. देयर इज नो सच थिंग लाइक एन अनहीटेड स्टोन. देयर कैन बी पीपल हु आर लाइंग टू यू, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. अनहीटेड स्टोन नहीं होता है. तो दे हीट इट, तो वो अंदर की इम्प्योरिटीज उसकी मेल्ट हो जाती हैं, दैट इज वाई दे लुक सो क्लीन. फिर भी कुछ अंदर व्हाइट व्हाइट सा रह जाता है, उसको इंक्लूजन बोलते हैं, दैट इज ओके. जो नहीं रहना चाहिए, दैट्स अ ब्लैक स्पॉट. दैट इज वेरी डेंजरस. दैट इज शनि राहु सिटिंग देयर, मस्ती से आ जाओ. ओके, सो दैट्स स्पॉइलिंग. तो वो काली छीटा बोलते हैं उसको हमारे लोकल लिंगो में. तो नेवर बाय वन विद अ ब्लैक स्पॉट. नाउ अगेन, द हीटिंग improves its astrological significance. Okay, people might think बिल्कुल नेचुरल, वो जमीन से निकला है, मैं ले लो. अरे भाई, द इम्प्योरिटीज वुड नॉट लेट द रेस पास प्रॉपरली. तो वो हीटिंग 20-30% उसको, हीटिंग वॉशिंग, वो 20-30% उसको अंदर से और ऊपर से क्लीन करती है. सो ये जो नेचुरल वाला चीज है, तो भाई वो नेचुरल ओरिजिन होना चाहिए. बट अनहीटेड या अनट्रीटेड जेमस्टोन मैं अगर आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे ये तो पत्थर का टुकड़ा, क्या बकवास है. इट इज सो ओके. यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. अगर कोई कह रहा हाँ जी अनहीटेड है, तो झूठ बोल रहा है, डोंट बाय फ्रॉम. उसके बाद में देर आर अ फ्यू केमिकल वॉशेज और थोड़ा ऑयल वगैरह में डालते हैं, दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज योर रिपोर्ट सेज ऑथेंटिक, जेन्युइन पन्ना या पुखराज या वट एवर, इट्स फाइन. उसको केमिकल से धोया हो या हीट किया हो, या उस पर ऑयल, ऑयल में अक्सर रखते हैं उसको जस्ट टू इम्प्रूव कि वो ब्रिटल नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए ओवर टाइम. तो एज लॉन्ग एज इट इज ऑथेंटिक. भाई अब गाड़ी लिए, साफ तो करोगे. जी नेचुरल गाड़ी चाहिए, उसमें धूल जमी हो भले से 2 फुट. एंड हीटिंग, बिलीव यू मी, हीटिंग improves the astrological significance, effectiveness of the stone. So sir, यंत्र better है या फिर gemstones? अगर gemstones, like you just told us that gemstones put your planets on steroids. So what does yantra actually do, and what is its significance? Okay, तो यंत्र क्या है? यंत्र इज अ न्यूमरोलॉजिकल डायग्राम. उसमें कुछ नंबर खास तरीके से लिखे, मैंने तुमको भेजे थे, यू नो. एंड इट हैज टू बी अ पर्टिकुलर साइज. राइट, केतु वाला तुम देखना थोड़ा सा बड़ा होता है, देयर इज अ साइंस टू इट. यंत्र आर लाइक होम्योपैथी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यंत्र डू हेल्प बिकॉज उनका पीछे देयर इज अ साइंस टू इट, बट दे आर वेरी माइल्ड. तो यंत्रात में क्या है, अगर प्लेनेट अच्छा है तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा. अगर प्लेनेट डिफिकल्ट है तो थोड़ा कम तंग करेगा. जेमस्टोन मतलब बिल्कुल फुल ऑन प्लेनेट को पावर मिलेगा. इफ यू वेयर अ जेमस्टोन ऑफ अ प्लेनेट व्हिच इज वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, तो वो आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है. But God forbid if you wear the gemstone for the wrong planet, you are doomed. दुखी कर मारेगा वो बुरा वाला आप, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स दे चेंज द केमिकल्स इन योर बॉडी. वो जैसे गूगल पढ़ के आप किसी भी बीमारी का इंजेक्शन नहीं ले लोगे. आई होप आप नहीं ले लोगे. ओके, वैसे ही यंत्रास यू कैन फ्लर्ट विद, मंत्रास यू कैन फ्लर्ट विद, नेवर मेस विद जेमस्टोन्स. दे कैन लिटरली मेक और मार यू. देखो लोग हमारे पास में आएंगे, शनि राहु या केतु के महादशा या अंतरदशा लगी होगी, 90% लोग तभी है. इट इज वेरी इजी टू टेल देम कि साहब राहु की महादशा, आप गोमेद पहनो. मेरा भी काम है जेमस्टोन्स का.
मैंने बहुत बेचे हैं, but I would never sell a cat's eye to a person in Ketu Maharashtra. So it depends upon the overall chart. Okay, so we have to consider the overall chart before taking a gemstone, purchasing a gemstone. Okay. Done. पूरा clear हो गया. Thanks a ton for doing this. I know it was a tough one, but finally we are here. I'll take your leave now. Namaskar.